रोटेट योर फोन। क्या कह रही है? चल रही है ना अभी? चल रही है लाइव चल रही। Hello and good morning from these grounds of Dhaid. Their match about to start. Very good conditions. Roaring Tigers. तो भाई थोड़ा पीछे जाए इधर। Hello and good morning from Dhaid. A match is about to start between Roaring Tigers and Blazing Bandits. This is the third match for Roaring Tigers in this tournament, and we hope that there will be a good match because both teams are pumped up. This is a very important match in the middle of the tournament. आपका पेट आ रहा थोड़ा पीछे दे। लाइव चल रहा है। ये लाइव चल रहा है। Hello and good morning from Dhaid grounds here. A match is about to begin between Roaring Tigers and Blazing Bandits. This is an important match in the middle of the tournament. So let's see for the game. Match is about to begin. थोड़ा सा उसको zoom करो. हाँ जी। अच्छा भाई मुझे कहा तू ये इधर आ। आप इधर ही रुको। अरे एक काम ही करता हूँ, पीछे खड़ा होना कमेंट्री करता हूँ पीछे से। एक कुर्सी दे दो, कुर्सी नहीं है। Ashraf bhai on the strike with Zaman. बाहर बाहर हट जाना। हाय 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 आएगा मजा। चलो। So, good morning once again. Roaring Tigers won the toss today and decided to bat first. Here we go with the first ball of the inning. Outside off, and the umpire gives a wide, so wide to start with. Scoreboard, le aao main scoreboard. It's a beautiful morning here in Dhaid, and we're expecting a good match. Again, outside off, and a fumble from the keeper. The ball runs towards the short fine leg. There's no fielder there. Keeper has to run down and just throw the ball. ओवर के बाद एंट्री होगी। कासिम स्कोर बोर्ड लेकर। स्कोर बोर्ड कहाँ से लेके आऊँ? वो जो मोबाइल में होता है ना। ओवर के बाद। So 2 balls. Okay, go. Eyes along. ओवर के बाद ही होता है। अशरफ भाई ने अलाउ कर दिए। There's a small stoppage period in the game right now. 2 fielders join late and being allowed by the opposite side captain. Starts the proceeding for Roaring Tigers. It's the captain Ashraf Abbasi alongside Zaman. Zaman played really well in the last match. Started beautiful in this time again. A straight bat shot towards the mid-on position and no run taken. 3 without loss is the score. And we have an expert commentator with us who will be taking part in the commentary in Urdu for you guys. This time beautiful shot in the air.
above the fielder's head, and this ball is running towards the extra cover boundary for the first four for Roaring Tigers. Beautiful shot, and that takes scores to 7. To start the proceedings for the Blazing Bandits is Safi, who has bowled only 2 legal deliveries and already cost 7 runs once again, bowling to Zaman. This is a good ball outside off. Zaman played it sensibly. The field set is quite amazing and like different. There is no fielder on the offside. Most of the fielders are on the onside. What do you say about this field setting, Mr. Qasim? It's a little unusual field setting, and the शाबाश 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 boundary guy is like on the first slip, but on the boundary. Safi comes in, balls in, a beautiful shot moving forward and hitting over the bowler head for the beautiful 6. So flying start for Roaring Tigers once again. जो मैं लॉक इसको लॉक कैसे करता हूँ? So in the first over already we have seen a 6 and a 4 from both batsmen opening their arms, and there are already 2 wides and an extra run. Now So the score is 14. it's 14 without loss, and this first over is still ongoing. 2 more balls to go. Not a good start for Blazing Bandits, Mr. Qasim. Rahata Raza Rahata. Once again was trying to flick, and the fielder did not judge the ball well, and the ball goes from the fine leg boundary for another 4. So this is an ideal start for Roaring Tigers. Just 5 balls in the game, and we already have scored 19 runs without a loss. So we have a lot of commentators here in the box today. 18 No, we are not English नहीं है। commentators. We are crowds. Crowd is on my head right now, and it's very congested here, and I'm just waiting for my partner commentator, Mr. Rahat. He's getting ready. इसको यूं करें ना फिर ये वो होगा। And if I show you the field settings, it's quite unusual. There is no fielder on the offside. Wide. Once again, down the leg, should be given a wide, is given a wide. So what we are saying is that the field setting is quite unusual. If you see that there is a fine leg, there is a third man come slip. I think it's a second slip just dragged down towards the boundary, and then is an extra, there's a cover fielder in the deep, and then all of the fielders are inside the circle. There is no point. Once again, Ashraf goes forward. This ball was on a good length, slow ball, I guess, and that ends the over. So at the end of first over, the score is 19 without loss. ये मेरी शक्ल तो खुल जाएगी। क्या? नहीं खुलिया, नहीं खुलिया। उन्हें क्या मास्क के नाल नहीं खुलना? Okay. After first over, it's 19 for none. Roaring Tigers chose to bat first. This is a important match in between tournament. I think the third match of the tournament, right? No, third match for Roaring Tigers. क्या हुआ? क्या हुआ? अब वो 17 से आएगा तो उसको आधा पौना घंटा तो लगेगा मेरे को पहुंचने So Zaman is playing on 5, Ashraf Abbasi is on 10. Both batsmen have already scored a boundary in a maximum. This time, it's a beautiful shot towards the deep cover, and the ball goes for another boundary. Azhar Zadi is the new bowler for Blazing Blenders. जो मैं शेयर करा लिंक मेरे मोबाइल को नहीं। लिंक कैसे शेयर करते हैं फेसबुक पे? ये फेसबुक पे लाइव आ रहा है ना, रोरिंग टाइगर्स के पेज पे लाइव आ रहा है। हाँ ये लाइव आ रहा है। शेयर Ready comes from the round the wicket to Zaman. Zaman plays with a straight bat, just a bottom edge, and the ball
moves towards the mid-on boundary. The fielder is there. ओके चाबी ले लो पानी किससे चाबी चाहिए? चाबी तो मेरे पास है. लेग एम्पायर के पास जो चाबी है उनकी गाड़ी है उनसे पानी लेना है Zeddy comes into ball, the third ball of his over. Ashraf Abbasi is there to face. Good ball and equally good shot. It's not a good fielding. It was a lazy attempt and ball moves towards the cover boundary and it's another 4. यार गल सुनो फेसबुक पे लाइव जो जा रहे हो उनका लिंक व्हाट्सएप पे किस तरह भेजी है इसी पे शेयर की ऑप्शन है मतलब वो शेयर की ऑप्शन पे आ रही है शेयर की ऑप्शन पे मैं किया है आगे की करना शेयर दो शेयर टू प्लेस सेंड इन मैसेज शेयर मोर ऑप्शन शेयर हुआ करो मोर ऑप्शन Nice shot. It's a beautiful sound from the bat and the bat ball again goes from top of the bowler just slightly on the long on boundary. That's another 6. Ashraf Abbasi is in good mood today. Already 2 sixes we have seen, both almost at the same place. The bowlers are not learning. They are just giving the balls mostly in the slot. This ball was again in half volley. Easily picked up and hit for a maximum. Flying start for Roaring Tigers. Left arm round. Another ball. This was just kept little low. The keeper was not able to judge it as well. And the batsman took an easy extra. Bye. The crowd is getting out of control here. A good ball. Again, it was in the slot, but Zaman is actually just trying to play with a straight bat. And we just have, as the end of second over, we have our partner commentator at last here, Mr. Rahat. So he will be taking part in the commentary in Pashto. In Pashto. Rahat sangi, the match sangi proceeding sangi da. सर स्कोर यार अब क्या स्कोर क्या बोलूं बता भाई अभी। सर जी स्कोर Qasim score 36 at the end of 2 overs. Safi comes into ball his second over. First over was quite expensive, 19 given in the first over, and then this was a better ball again in the slot, but Zaman is actually just playing safe. He's just played with a straight bat towards the cover, just a single. Ashraf Abbasi is playing a little differently today. He's in aggressive mode, so let's see what happens in the next ball. Super. 37 for the loss of no wicket in the third over. Again moves forward and hits it in the air towards the mid-wicket boundary. This ball should race to 4. Yes, it is. It was up in the air, but there was no fielder placed there. So easy pickings for Ashraf at this time. शाबाश 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 गुड बैटिंग इसमें शेयर का ऑप्शन नहीं आता क्या? ये क्या? नहीं। ये मेरा बहन भाइयों का ग्रुप है, ठीक है? ये मेरा बहन भाइयों का ग्रुप, ठीक है? मैंने उसमें शेयर किया, भाई मेरा कहता है तुम नजर नहीं आ रहे, मगर मेरे माय टीम इज बैटिंग। आगे से मेरे भाई का रिप्लाई क्या है? इतना मोटा भाई बैट से नहीं लगा Towards the fine leg with the pads, umpire is given as leg buys and तो लेग बाय दिया एम्पायर ने
crowd is quite concerned about About what? score, about the scoring. Is it bad or bad? तो आपके पास स्कोर बोर्ड नहीं है? ये देखो ना. ना. Now the score is 45 and 2.3. Yes, 2.3 overs. It's an ideal start for any team. So we are looking towards 200 plus today. Let's see how it proceeds. Once again comes in Safi Ashraf, moves forward. This time it's bigger and better. Over square leg. Good and shot, that is a Ashraf boy. six. Well played. शाबाश हाथी मेरा साथी ओ मैं तो अशरफ भाई वेरी वेल बैटिंग Hamza Khan is watching. Anika Khan is watching. दोनों Well played, Ashraf boy. Well played. A lot of viewers we have already. शाबाश सफेद रहना दूंगा Oh hello live आ रहा. So Safi is under a lot of pump today. करता है अपने बहन भाइयों के ग्रुप में लिंक. मेरे इस वक्त एक बहन देख रही है, भाई देख रहा होगा. Oh, beautiful Good shot, over Ashraf cover. boy. This should run for another should be four, four. Yes, should it be four, is. yeah. Beautiful shot. So we have seen shots all around the ground already. आगे से मैसेज क्या है? वो कितना मोटा प्लेयर है. शाबाश 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 We have a packed house here. All 11 players are watching. असलान जुगता हुआ Once again moves forward, hits it. And that's a beautiful shot and runs for another four. शाबाश शाबाश गुड बैटिंग गुड बैटिंग Good shot. It's one of the bad days for Safi. Already given 32 runs in 1.4. Oh, in fact, अपडेट नहीं हुआ रिफ्रेश करो 49 Ah, 59. so at the end of शाबाश 2 टीम 50 overs, अप नो स्कोर पहले टीम 50 भी है आपकी कभी कभी होती है उस पे फुलझड़ियां चलाएंगे 59 in 3 overs. That's an amazing start. Safi has given 42 runs in 2 overs. And he's about to break Batsab's record because in 3 just overs 10 56. 10 runs out. 4 थे 3 थे 4 थे 3 थे 4 थे यार 3 थे 6 ओवरों में 3 में आपको 50 पड़ा था 3 में इसको 50 पड़ा था. मुझे 54 पड़े थे. हाँ जी. इनको 3 में 54 पड़े थे 4 में 56 नहीं जी 3 नहीं, ओवर थे. दोनों के बराबर. दोनों के ओवर बराबर थे. दोनों के 4 हैं. 4 हैं. बट साहब शीट निकाल लेते मान लें दोनों के 4 थे. दोनों ने सर आपके 4 नहीं हुए थे नहीं सब बात साहब या तो 3 थे या 4 थे. दोनों के ओवर बराबर स्कोर थे. शीट निकाल लेते निकाल लेंगे. पिछले टूर्नामेंट का फर्स्ट मैच निकाल नहीं लेंगे. पिछले टूर्नामेंट का फर्स्ट मैच. नहीं नहीं उसमें तो मुझे कुछ नहीं पड़े. मुझे तो बहुत पहले पड़े. ओवर में 23 पड़ा था आपको तो कुछ नहीं पड़ा There were a few guys just talking about their bowling. So a bowling changed, Good but shot. result is not शाबाश changed. अमान शाबाश अमान. This is running towards between fine leg and square leg, and Oh, the hello. ball goes for 3 4. में 60 कैसे हो गया? 60 ही बोला ना कुछ 22. इनमें 60 59 है 3 में फिर एक वाइड हो गई 60 हुआ फिर 64 हो गया ओ तेरी अशरफ भाई 10 को पता की है 42 11 गेंदा थे. अशरफ भाई पानी चाहिए चरस पीनी है Oh यार भाई. लाइव आ. हाँ वाकई सही कहा है नवाज शरीफ चोर है इमरान खान थोड़ी है Prince is a new bowler for Blazing Bandits. It's getting quite difficult to नहीं keep. उर्दू में करो यार उर्दू में कमेंट्री करो 5 ओवर के बाद उर्दू में जाए. 5 ओवर के बाद. Right now we are going in English. After 5 we will go in Urdu. Yes, after this. And after 10 we go in because Pashto. my friend we don't know English Okay, and okay. we don't और understand आवाम English की पुरजोर फरमाइश पर अब हम उर्दू में कमेंट्री करेंगे. इस वक्त नए बॉलर प्रिंस हैं ब्लेजिंग बैंडिट्स के लिए आए हैं. बॉलिंग करने ज़मान कर रहे हैं. उनका सामना आए ऑफ स्टंप के ऊपर से खेल दिया है टूवर्ड्स मिड विकेट. शाबाश अमान good shot Zaman 4 रन्स मिलेंगे. सीधा मारता तो छक्का हो जाएगा एग्जैक्टली सीधी नहीं मारी उसने रोरिंग टाइगर्स का बढ़ता हुआ स्कोर 68 बिना किसी नुकसान के. हम चौथे ओवर के अंदर हैं और इस वक्त हमारे पास एक एक्सपर्ट बैट्समैन मौजूद हैं
राहत हुसैन। अयाज भट्ट भाई, अकबर अकबर AAB भट्ट साहब जो यार उनको इसका शॉट भी दिखाओ यार AAB हाँ, अयाज साहब अब आपको दिखाते हैं अब अब सुनाई लो AAB का ये आपके उस्ताद सामने है। ये भट्ट साहब हैं, भट्ट साहब और अकबर साहब, कासिम खान, राहत, Another good shot. गुड शॉट जमान, गुड शॉट। वेरी नाइस शॉट जमान। पीछे कर पीछे है, पीछे। आजा पीछे और पीछे कर बाउंड्री पीछे तो देखो थोड़ा इसको ऐसे कर, ऐसे। आई जूम ज्यादा है इस तरफ। लोग फाइनल के लिए फील्डर जो है वो जी जूम कम करो। नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। शाबाश जमान, वेरी नाइस बैटिंग। ऐसे ही होता है ना, बस ठीक है। The score is 72 in 3.4. अब उर्दू कमेंट्री है भाई। रोरिंग टाइगर्स का बढ़ता हुआ यार ये इसको जूम, भट्ट साहब इसका जूम थोड़ा कम करें। इसको ओ बहुत ज्यादा कम कर दी है। नहीं सही, ओह वेल बॉल यार। क्योंकि इससे ना आपको डायमेंशन रहेगी शॉट कहाँ जा रहा है। सही नहीं, आपने बहुत पीछे कर दिया। सही है, बिल्कुल इसको थोड़ा सा जूम इन करें। छोड़ो डायरेक्शन छोड़ो बस, बैट्समैन को आने का बैट्समैन आना चाहिए, बैट्समैन और बॉलर आना नहीं चाहिए। अशरफ भाई आ रहे हैं। थोड़ा सा और जूम थोड़ा और कर दो। थोड़ा और कर दो बैट्समैन और बॉलर आना चाहिए बस। बस बहुत है। शॉट को छोड़ो शॉट किधर जाने को अब हमारे पास इतने तो कैमरे थोड़ी हैं कि हम हर कैमरे से शॉट दिखाएं। यार ये फील्डर आगे आ गया, हमारा बैट्समैन अशरफ 42 पर खेल रहे हैं इस वक्त आगे बढ़ गया। मार दिया। और अच्छा शॉट, 4 रन मिलेंगे क्योंकि फील्डिंग की क्वालिटी जो है वो बहुत गुड ही शॉट, गुड शॉट, गुड शॉट बुरी है। अशरफ भाई, गुड शॉट। शाबाश। हमसे बहुत अच्छी है पेट के जोर से शॉटें मारो सारी। 77 in 4. 4 ओवर के अख्ताम पर 77 है रोरिंग टाइगर्स का स्कोर। अशरफ अब्बासी खेल रहे हैं 46 रन पर, 12 गेंदों का सामना किया है और जमान खेल रहे हैं 25 पर, उन्होंने भी 12 गेंदों का सामना किया है। 2 ओवर खेले हैं अशरफ अब्बासी ने और 2 ही ओवर खेले हैं शाबाश जमील जमान, ने। वेरी नाइस बैटिंग जमान। सैफी जो कि जिन्होंने बॉलिंग का आगाज़ किया था, उन्होंने 2 ओवर में 42 रन दिए हैं और प्रिंस ने 1 ओवर में 18 रन दिए हैं। तो अब तक जितने बॉलर भी आजमाए हैं उन तमाम बॉलर्स की बॉलिंग जानदार नहीं थी। मेरा ख्याल है कि इनको इस वक्त स्पिनर लाना चाहिए था, लेकिन दोबारा प्रिंस ही बॉलिंग करने के लिए आए हैं। फिर फैसला है। लेग स्टंप की तरफ आता हुआ बॉल, रन आउट का खतरा है और एक शाबाश शाबाश, दूसरा गुड रन रनिंग। मौजूद था, लेकिन रिस्की अशरफ रन अब्बासी की ने जरूरत नहीं है। शाबाश, अच्छा खेल रहे हैं दोनों। ब्रेक लगाने के बाद रिस्की रन नहीं चाहिए। दोबारा अच्छी शॉट्स लग रही हैं दोनों की। नासिर अली आए हैं बॉलिंग करने के लिए। बॉलिंग में चेंज है, चौथे बॉलर ब्लेजिंग बैंडिट्स के लिए दौड़ते हुए आए। बॉल के अशरफ अब्बासी फिर आगे बढ़े और उन्होंने जाएगा चौका। स्क्वायर लेग की तरफ खेला है। फील्डर वहाँ मौजूद हैं, दूर से दौड़ कर आए कि इनको फील्ड किया, थ्रो करने के बिल्कुल मूड में नहीं लग रहे हैं। उन्होंने स्क्वायर लेग को बॉल पास की, स्क्वायर लेग ने बॉल हाथ में घुमाई और उसके बाद इत्मीनान से बॉलर के हाथ में फेंक दी। फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली। क्या पकड़ा केपी ऑफ स्टम्प पे अच्छा बॉल, अच्छी लेंथ, जमान जज नहीं कर पाए, पहले आगे बढ़ गए थे और बॉल मिस कर गए। एरिया कौन सा है ये? लॉन्ग ऑन पे किया था ये। लपेटे मारने के चक्कर में ना कि बैट्समैन इधर खेल सकता है आराम से। लॉन्ग ऑन पे खेलने गया गैप देखो कितना। यार ऑफ साइड की फील्ड ही नहीं है, बॉलिंग ऑफ पे कर रहा है और ऑफ साइड की बंदे फील्ड कम लग रहे हैं सर गेंद। इस दफा लॉन्गों मिड ऑन के ऊपर से खेला है। गुड शॉट 6 रन। जमान। शॉट जमान, गुड शॉट। जमान कितने पे आ गया? 30 में आ गया होगा। हाँ, मज के साथ खेलता रहा, बट की बैटिंग नहीं आनी चाहिए। रोरिंग टाइगर से मेरा ख्याल है ये बेस्ट स्कोर है। 4 ओवर में 85 रन। फर्स्ट टाइम हम लोग 100 क्रॉस करेंगे। बैट्समैन का कोई कमाल नहीं है, बॉलर ही बहुत ढीली है।
बहुत ही ढीले बॉल। अशरफ अब्बासी यार अपनी जिंदगी की शायद तीसरी 50 करेंगे। नहीं इन्होंने 100 भी मारी, 100 भी किया, एक या दो मारी। नहीं मजाक कर रहा हूं। 100 भी किया। स्पिन करने लगा नहीं, मीडियम में नासिर अली। यार मुझे इसका हाथ टुंड लग रहा है, ये टुंड खींच रहा हाँ है टेढ़ा ही। हाँ टेढ़ा है। खूबसूरत शॉट। Very nice shot, Zaman. स्टॉपिंग फॉर दिस शॉट। गुड बैटिंग। जमान एक प्रॉपर बैट्समैन है, 360 खेलते हैं। शाबाश जमान, चल के नॉन स्ट्राइकर एंड तक जाया कर, बैट्समैन थक जाएगा दूसरा। शाबाश जमान, वेरी नाइस बैटिंग जमान। मतलब अगर इनकी बैटिंग बॉलिंग जैसी हुई तो फिर आज का मैच खेलने का मजा कोई नहीं आना। I don't know. बैटिंग इनकी बुरी है। बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं उसने बोली इसकी बैटिंग बहुत स्ट्रांग है। नहीं कह रहे हैं ऐसे। बड़ी बात की है, पिच पे आराम से भागो, मैंने बैटिंग करनी है, टोए ना डाल देना। क्या किया है? ये वो है। 47 पे बोल्ड ओवर हो गया। शिट यार, इस ओवर में कुछ आया ही नहीं। अपडेट ही नहीं हो रहा। अब होगा। उसको पूरा करे ना। 90 5 ओवर के इख्तिताम पर 5 ओवर 90 स्कोर। अशरफ भाई को बोलूं 3 चाहिए? हम पता है उनको बता रहे। नहीं अशरफ भाई 3 चाहिए। 3 और लाइव है के आराम से बोलना। मैं बड़ी गंदी चीज बोलने लगा था, मैं बंद छोड़ दिया। मेरा ख्याल है बॉलिंग में एक और तब्दीली की जा रही है शायद। शाबाश, ना ये रोरिंग टाइगर्स का मुंह है ना हाथ है, ये सीधा पेट है। आउट होने के बाद वो तेरे साथ क्या करेगा पता नहीं। बाकी यहीं से बैठ के मैं बैठ कर रहा हूँ। स्पिनर को बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए। पहला बॉल हल्के हाथों से जमान ने खेला। स्पिनर इतना पीछे क्यों खड़ा है? स्पिनर ने फील्ड के लिए अच्छा वो लिए लॉन्ग और मिड विकेट। लॉन्ग और मिड विकेट। यार ये लड़के पूरे 5 ओवर का ही फील्डिंग में ली ऐसी। लड़के पूरे नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 कम है, ये 9 लोग हैं। अच्छा बॉल फाइनल लेग की तरफ बॉल गया। फील्डर का कोई मूड नहीं है वहाँ से आने का। और ये जो सेकंड स्लिप लॉन्ग सेकंड स्लिप के फील्डर भाग के पीछे गए और उन्होंने बॉल को थ्रो किया। कीपर को एक थर्ड मैन पे भी नहीं खड़ा है। ये स्लिप पीछे की। ये स्लिप इस निकाली हुई थी। शॉर्ट थर्ड में शॉर्ट थर्ड में नहीं है। अब पहले वो बाहर खड़ा था, बाहर पता कितने खड़ा था फर्स्ट स्लिप की जगह पे। हाँ फर्स्ट स्लिप अभी भी वहीं खड़ा है। अभी भी शॉर्ट थर्ड में नहीं है। शॉर्ट थर्ड में इधर आए। अशरफ अब्बासी ने खूबसूरत शॉट खेल के अपनी 50 अप। वेल प्लेड अशरफ भाई। शाबाश, आपके वजन का 1/4 हो गया स्कोर, बाकी 3/4 3/4 रह गया। नहीं खेलो आराम से, ड्रामे ना करो। सेंचुरी करो, सेंचुरी कर लो आज। कोई 7-8 साल तो हो गए मारे हुए। बेचारे सारे चुप हैं, कोई एक बंदा नहीं बोल रहा। अच्छा हम बोल भी कुछ गुड शॉट अशरफ भाई। अब शाबाश एक और शानदार छक्का स्क्वायर लेग के ऊपर 100 अप और इसके शाबाश, साथ ही टीम 100 अप गाइस, टीम 100 अप। शाबाश, रोरिंग टाइगर्स ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। 5.4 ओवर में 100 रन बना दिए हैं। तालियां बजाएं, तालियां सब लोग। वेरी नाइस बैटिंग, शाबाश गाइस। मिस कर दी होगी आपके कितने। पहली दफा पावर प्ले में रोरिंग टाइगर्स ने 100 रन का हदफ पार किया। पहली दफा नहीं हुआ, पहली दफा हुआ। इससे पहले 88 है शायद हाईएस्ट। हेलो मैं आज तक नहीं देखा अपना 100 स्कोर होता है। एक शूटर कराई है, तेज बॉल पैड्स पे लगी। मुझे नहीं याद कि हम लोगों ने कभी सेंचुरी की है 106 में। नहीं किया 6 में 88 किया, मुझे 88 याद। नहीं किया। अच्छा
और इस दफ़ा खूबसूरत शॉट, लेकिन फील्डर वहाँ मौजूद हैं, कोशिश करेंगे रोकने की। रुक जाएगी, बॉल भाग नहीं रही। बॉल खुद ही रुक गई और आखिरकार फील्डर ने थ्रो किया, अच्छा थ्रो। बॉल टू गो, ओवर। इट्स ओवर एट द एंड ऑफ 6, स्कोर 102। होगा इसे नहीं, हाँ शूटर 102 था, है, डॉट बॉल था। 102 बिना किसी नुकसान के। पावर प्ले खत्म हो चुका है, लेकिन बदकिस्मती से ब्लेजिंग बैंडर्स के पास 2 फील्डर कम हैं। 102 हो गया, 28 और करो तो 130 आपके वजन के बराबर हो गया। किसमें? कोयटा के अलावा सारी हैं। इसमें कोयटा कराची, कराची है। कोयटा इस्लामाबाद। नहीं यार, कराची इस्लामाबाद इस्लामाबाद नहीं है, खोल इसको। कोयटा भी नहीं है। कोयटा इस्लामाबाद नहीं है, बाकी कोयटा इस्लामाबाद नहीं है। 4 पे पेशावर है, 3 पे वो फर्स्ट पे मुल्तान है, सेकंड पे लाहौर है, थर्ड पे कुछ और है, चौथे पे पेशावर है। इन लोगों ने पूरी रात भी इधर गुजारी, फिर भी प्लेयर कम है। ग्रिल बजाएगी। आगे बढ़ के ऊंचा शॉट लगाना चाहते थे, मिस टाइम किया और फील्डर की गलती की वजह से 4 रन मिलेंगे अशरफ अब्बासी को। उठाओ फोन उठाओ। अच्छा भाई, पानी पानी आपके फेसबुक पे लाइव चल रहा है, घटिया इंसान। मेरे बाल देख रहे हैं, नहीं, सफेद है बस। बहुत सफेद है, क्या हो गया? सफेद तो हमारे भी है, क्या होगा, कुछ नहीं होता। फील्डर 3 तुम्हारा तो उम्र से सफेद है ना, मेरे तो पहले सफेद हो गया। और खूबसूरत शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन के लिए। बैट्समैन घूमा स्क्वायर लेग की तरफ, बल्ला टाइम पे ला नहीं पाया और छक्का। कासिम देख रहे हैं वो लोग लाता कमेंटिंग कर रहे हैं। खूबसूरत शॉट और रन खतरा जमान की तरफ से। दूसरा भाई ज़मान इंतहाई दर्जे का सुस्त प्लेयर है। बिल्कुल सही बात की हमारे एक्सपर्ट कमेंटेटर ने। जमान एक इंतहाई 100 ओवर का प्लेयर है, जमान 20 ओवर का प्लेयर नहीं है, इस बॉलर की बहुत मतलब टेस्ट का भी नहीं है वो, 100-200 ओवर वाला प्लेयर। शान मसूद के बाद सबसे स्लो प्लेयर जो है वो हमारे पास जमान मसूद है। खूबसूरत शॉट कवर के जाने, फील्डर वहाँ मौजूद है, लेकिन और पहली दफ़ा एक अच्छी फील्डिंग देखने को मिली है। पिछले 7 ओवर में पहली दफ़ा ब्लेजिंग बेंडर्स के एक फील्डर ने 3 सिक्सर्स। क्या स्कोर हुआ? यहाँ पे टंकी कहीं नहीं है। सामना करेंगे जमान और क्या था? बोल्ड हो गए जमान। पहली विकेट रोलिंग टाइगर्स की गिरती हुई। एक बहुत ही ऑफ स्टंप के बाहर बॉल थी, बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं थी इस बॉल को लॉन्ग ऑन या मिड विकेट की तरफ मारने की, लेकिन जमान ने बिल्कुल ही गलत चॉइस ऑफ शॉट इस वक्त ऑप्ट की और इसकी वजह से अपनी विकेट दे बैठे। नए बैट्समैन अयाज भट्ट। नए बैट्समैन अयाज भट्ट हैं। अयाज भाई तस्वीर दिखा के जाइएगा। अयाज भट्ट बहुत ही अच्छी फॉर्म में खेल रहे हैं, पिछले 3-4 मैचेस से बहुत अच्छे। शाबाश शाबाश, 50 नहीं हुई। अयाज भाई टर्न कितना हुआ है? अयाज भट्ट 113। ग्लव्स आशा भाई को ग्लव्स दो। मैच
पहले विकेट का नुकसान रोरिंग टाइगर्स को। अयाज भट्ट आए हैं बैटिंग करने के लिए, अच्छी फॉर्म में है अयाज भट्ट। पहला बॉल बिल्कुल सीधा विकेटों में, पैड्स के ऊपर। आउट से सीधा लगा, थोड़ा ऊंचा नहीं हो, आउट से पक्का आउट। यार कितना ऊंचा भट्ट साहब दी विकेट, कितना ऊंचा आउट था ना। और स्कोर 7 ओवरों में 113 एक विकेट के नुकसान पर। ये किसने आउट किया दिखाना? 1 सेकंड स्कोर का प्रिंस ने बोल्ड किया। प्रिंस पहले कामयाब बॉलर ब्लेजिंग बैंडिट्स के लिए। जमान जमील ने 38 रन बनाए, 20 गेंदों का सामना किया, 6 चौके और 1 छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। अशरफ अब्बासी 69 रन पर खेल रहे हैं। अयाज भट्ट ने अभी कोई स्कोर नहीं किया है और बॉलिंग करने के लिए दोबारा आए हैं। गेंद हवा में है, फील्डर वहाँ मौजूद नहीं है, दूर से दौड़ कर आए, गेंद को फील्ड किया और थ्रो किया बॉलर की तरफ। 1 रन बना है। सही। कासिम अब्बास स्कोर जिस हिसाब से शुरू हुआ था थोड़ी सी रोक लगी है और दायरे के ओवर क्योंकि ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए अयाज भट्ट ने सीधे बल्ले से मिड ऑन की जानिब खेला। मिड ऑन के फील्डर लॉन्ग ऑन पर हैं, पीछे हैं, आगे फील्ड जगह खाली थी, आराम से एक सिंगल लिया। सत्तर रन बना चुके हैं अशरफ अब्बासी, 22 गेंदों का सामना किया है। बहुत अच्छा मौका है उनके पास एक बड़ा स्कोर खड़ा करने का। रोलिंग टाइगर्स के कप्तान हैं, आगे बढ़े और दोबारा से स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलना चाहते थे। गेंद हवा में, फील्डर को कोई आइडिया नहीं था गेंद का, गेंद उनके सर से पीछे गिरी और एक आसान कैच ड्रॉप। पहली बार ब्लेजिंग बैंडिट्स के कीपर की आवाज़ सुनाई दी हमें। कासिम सामना करेंगे अयाज। धीमी बॉल थी, बहुत ही लो लेंथ पर बॉल आई और अयाज भट्ट बिल्कुल उसे जज नहीं कर सके। अब तक विकेट पर बैठे हैं। इस दफ़ा पॉइंट की तरफ खेला और आसानी से 1 रन हासिल किया। 7.5 ओवर्स का खेल हो चुका है, 117, 1 विकेट के नुकसान पर। एक दफ़ा फिर बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, मिस टाइम किया, गेंद गई है फाइनल लेग की तरफ, फील्डर गेंद के पीछे हैं, गेंद की स्पीड खासी स्लो है, इसलिए आसानी से थ्रो करेंगे। अच्छा थ्रो, लेकिन लेट हो गए। 8 ओवर के अख्ताम पर 119, 1 विकेट के नुकसान पर। डग आउट का सामना कराना है। हाँ, करा दें। इतने डग आउट बड़ा वो है। One 119 for the loss of 1 Roaring Tigers. कौन है बॉलर? जाफर। बॉलर अभी अपडेट नहीं हुआ।
कौन है? अपडेट ही नहीं होना उसका। वही बॉलर है पुराना वाला। नहीं बॉल ही नहीं आई। नहीं बॉलर वही पुराना है। हाँ अब बॉलिंग पे आए हैं प्रिंस अपना 30 ओवर कर रहे हैं पहले। कामयाब बॉलर हैं, 2 ओवर में 30 रन देके एक विकेट हासिल किए। अशरफ अब्बासी करेंगे थोड़ा सामना प्रिंस का। आगे बढ़े, बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, मिस टाइम किया। बॉल बॉटम एज लेती हुई गई मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के दरमियान तेज़ी से दौड़ के अशरफ अब्बासी ने 2 रन हासिल किए। Ashraf Abbasi is playing really well. He is in his 80s and looking forward towards his century. Prince comes into ball to Ashraf. This time a good ball, but towards the leg side. Keeper was not able to collect it. It's a wide and an extra, so 2 runs added to the tally without an effort. Prince has to reload this ball and ball it to Yaz, but who is playing little defensively to start with. He was in a very good form since last 3 matches. That's from the start of this tournament and carrying his form from the last tournament. Prince comes into ball to Yaz. This time again an edge and ball runs towards the fine leg boundary for first 4 for Yaz, but the flow of runs continues for Roaring Tigers. भाई स्कोर बताएं। स्कोर हो गया है 128 8.3 128 for the loss of 1 wicket after 8.3 overs. Small break in the game. Change of helmet for the keeper. Prince comes into ball the 4th over of 9th. 4th ball of 9th over. Good ball. This was a Yorker length ball. For the first time we have seen a good ball from Prince and Blazing Bandits. The ball moves towards the... Ashraf was intending to take the 3rd run. Very keen from Ashraf. 2nd run. Prince is putting all his effort to stop this flow of runs. Good ball again. It's a good one. A good Yorker. Sensibly played by Ashraf this time. Stugging out the ball. Again a full length ball with good strength. Ashraf plays with a straight bat towards mid-on and the follower fields on his follow-through runs towards the mid-on. He gets a boundary, end of 9. Qasim and Prince actually tried controlling the flowing of runs and they are successful till now. The start was very bad for Blazing Bandits, especially Safi, who gave away 42 runs in his 2 overs. Prince is the only successful bowler till now. So start of over number 10 for Blazing Bandits. Roaring Tiger are very hopeful to get it across 200 this day, today. That should be very much on the cards. They are aiming towards more than that. चले हम टीम का इंटरव्यू करवा के लाते हैं।
So the meanwhile, ओए खड़े हो जाओ यार, खड़े हो जाओ, इंटरव्यू कराना है लाइव। so the dugout. हाँ लाइव जा रहे हैं हम लोग। And drop catch. Classic 4 runs. So अभी हम आपको रोलिंग टाइगर की टीम से मिलवाते हैं। भाई तुम लाइव आओ। This is Akbar, विकेट कीपर बैट्समैन। wicket keeper batsman. रोरिंग टाइगर के लिए अगले बैट्समैन तैयार हैं। कासिम खान, कासिम मुगल, और ये टीम के बॉलर्स यासिर, राहत भाई, अरसलान। ये दूसरे बट हैं टीम के, आकिब बट, और ये हैं वो सुस्त प्लेयर जमान जमील। अच्छा गेम खेला उन्होंने। कमेंटेटर से मिला। और ये है हमारे साथी कमेंटेटर जनाब कासिम खान साहब। और ये हमारे मेन कमेंटेटर आफ्ताब। खूबसूरत शॉट अयाज बट का, और गंदी फील्डिंग फील्डर्स की तरफ से। एक और चौका रोरिंग टाइगर के स्कोर में जुड़ता हुआ। खूबसूरत बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप, मिस किया अयाज बट ने। 140 हो गया। 140, एक विकेट के नुकसान पर 10वें ओवर का खेल जारी है। फिर आए कासिम ऑफ, अच्छा बॉल, फुल लेंथ बॉल, और कोई रन नहीं मिलेगा। फुल टॉस और एक आसान कैच अयाज बट फुल टॉस बॉल पर आउट हो गए। गंदी गेंद पर आउट हुए और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया स्कोर में। अयाज बट की इनिंग का अख्ताम। अगले बैट्समैन रोरिंग टाइगर्स के लिए है कासिम मुगल। जाते हैं आप बाहर रहेंगे फिर बजाएंगे। भाई नेक्स्ट पैड करो, पैड नेक्स्ट करो। बैट कौन है? अरसलान है, शायद अरसलान है। असलान और आकिब हैं इसके बाद। बोला हुआ ऑर्डर बताया हुआ है। आप है और फिर आकिब है। पहले अशरफ भाई, और एक गंदी बॉल पे आउट होके बाहर आने वाले बैट्समैन। तो गंदी बॉल ना, छक्के वाली बॉल पे आउट हो गए। अकबर 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 के बाद आकिब ऊपर करो, असलान नीचे करो। आकिब अकबर के बाद अच्छा ठीक ही था, इतनी गंदी बॉल सीधा मारते जाती है, इधर लगा बॉडी पे थी। नहीं। आपको 2-3 बॉलों से अच्छी कराएंगे, आपको 2-3 बॉलों से अच्छी कराएंगे, लेकिन ये वाला बॉल अच्छा नहीं था। फुल तो सिक्योर चुकते लगते बाहर। प्रॉब्लम ये था, बॉल इतनी स्लो आ रही है इनकी, बैट जल्दी घुमा रहा हूँ मैं बॉडी पे थी बॉल, और कोई मसला नहीं है। अभी भी यही हुआ है कि यहाँ पे आके बैट रोका तो हेड में लग गई। ये लड़का बहुत यंग नहीं लगता? जंग है। शाबाश चौका। फाइन लेग की तरफ से द बॉल rolls towards the fine leg boundary, wide ball अशरफ for भाई 5 आउट होने runs. के लिए खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरा कैच नहीं पकड़ा, मैं तो आउट होना चाह रहा हूँ।
5 runs without bowling a ball. Tabish is a new bowler. कसम से यार लड़का बहुत यंग है यार, बॉलिंग में करने आया है। A young lad. नहीं है, उसकी bowling नहीं पहुंच रही. ये यंग है, बहुत यंग है लड़का। Outside off stump, a good length. Young blood into the team. And this time over the bowler head. This ball is running towards the long off boundary. The fielder feels the ball, throws it back to नहीं अशरफ भाई का पीछे गिरा। ये वो बाउंड्री वाला क्या? Qasim Mughal. Normally plays up in the order, 1 or 2 down. Today is doing his job at second down position. Tabish comes into ball to Qasim Mughal, first ball for him. Slow ball, played beautifully towards cover, and it's a bad building effort in the covers, covered well by the deep fielder. Throws it back, a single taken. Good over from Tabish. Just a first bad ball, which was on the legs, went for 5 extra runs. बहुत आगे बढ़ गए थे। यार ये लड़का बहुत यंग है यार, 20 साल से छोटा है कंफर्म। क्या हो गया? नहीं खेलना चाहिए उसको. नहीं खेलना चाहिए, वेरी गुड। An edge rolls towards the final leg. The 4th slip fielder runs. अच्छा मेरी बात काल सुनो, असली इस तरह दबाव से मारिए ना तो सानू बहुत पे होता है बाउंस से। असल में इसकी स्पीड बहुत कम है, जज नहीं है. कासिम पानी ले जा यार ये ले जा Good ball, very good ball. ओवर हो गया? End of the मैं ले जाता हूँ, ले a beautiful over. वो लेके जा रहा है। After 11, the score is 1-4-8 for the loss of 2. कहाँ है पानी है सुजा? पानी किधर रखा है? कैमरा लगा है और वो भी किसी बड़ी मेन रोड पे नहीं, अंदर एरिया में अंदर एरिया। हाँ वही 4 से दिन सुबह 6 बजे 6:30 और कितने इजी दोगे, कुछ नहीं बोलोगे दे दोगे, लेकिन अगर यही पाकिस्तान में हुआ तो गालियां भी दोगे, लाइव भी कसम है, अशरफ के ग्लव्स कौन साथ पड़े हैं? सारी तस्वीरें कर तस्वीरों के साथ फाइन आया है कार में, वो जो कैमरों के साथ वो 7-8 फाइन आए मैं दिसंबर में पिछले साल पाकिस्तान गया था, एक ही जगह पे। अम्मी के साथ कहीं से वापस आया था, हेलमेट नहीं पहना हुआ था। अच्छा मेरे दुबई वापस आने के बाद घर पे तस्वीर पहुंची, हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चला रहा हूं। अच्छा बल्ला है वो यार, किस्मत ही है
एक मैच खेला परसों सिंध वाले जब इंतहाई घर देके बल्कि ये मैंने लिया इसलिए मेरे हाथ में पसीना बहुत ज्यादा आता है बट्टो 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 माँ चुदाओ मैच जाके खेला और कल शाम को बट्टो से माँ चुदाओ अपनी सालों बट्टो ये लगे की कब माँ बंद करना बंद नहीं कर सकते तो मेरा कौन सा शक्ल नजर आ रहा है बट्टो की भी माँ की आंख अल्ले बस बट्टो तो वो कह रहे मैं कहा वो पैंट चोर उसने भी पूरा पाकिस्तान का बेड़ा कर किया हुआ है ना फेस तो लोग बांग्लादेश उसकी वजह से गया है स्कोर बोर्ड लिया यार कासिम स्कोर बोला बेटा अच्छा भाई कितने कौन से मुल्क उसने उनके हिस्से में कर दिया So after the break, welcome back. Over number 12. And a beautiful shot towards the deep cover for a single. 149 for the loss of 2. Qasim Mughal waiting for his third ball. Beautiful shot towards the cover fielder. There's a small slight fumble. Makes it easier for the batsman to take the single. Ashraf Basi inching closer to his 100. Moves forward, hits it harder towards the long on and an easy single. The field is well spread out now, so it's difficult to score free boundaries. But very well start by Roaring Tigers today in the power play. They scored more than 100 runs this time. A good ball, full length towards the legs. Qasim plays it sensibly towards the mid wicket and the fielder fields it. 1 run added to the tally. This is a good over in the circumstances where the run rate was more than 10 in any over. In some cases, it was more than 15. This time, Ashraf was trying to smash that ball, a chance of a run out, and the fielder misses it. The ball goes for overthrows and easy extra run. Onto the pads, easy pickings for Ashraf, who's well set and plays beautifully towards the square leg for another boundary. Qasim, score de de bachche. Ashraf bhai kitne? At the end of 12 overs is 158 for the loss of 2. Ashraf bhai. 37 balls, 91. Ashraf Abbasi is playing very well, 91, 9 runs away from his century. He's faced only 37 balls. Beautiful inning. Tabish comes into ball his second ever young blood. Good first over, except that first ball on the leg side. This time Qasim was trying to smack that ball. No timing at all in that shot. Ball just drops in front of the long on fielder. Easy single. 159 interval, 0.1. Ashraf Abbasi is on 91 on 37 balls. Tabish
Very well. नहीं, Umar bin Aziz. Umar bin Aziz, pardon. Comes into ball to Ashraf. This time on the legs, played towards the square leg. It's becoming his favorite shot. Another 4. Very close to century now. 95 of 38. Just a hit away. If he can smack it. 95 he has scored. Very well placed for his 100. Roaring Tigers are very well settled for a score of 250 plus now, because we're in 13th over and we have 7 more overs to go, and there are a lot of hitters in the dugout. This time moves forward, hits it over bowler's head, and that goes for a huge 6. That's 100 for Ashraf Abbasi. Very well played. Recognizes the dugout, and an excellent inning. With 12 fours and 6 sixes. 12 fours and 6 sixes in his 100 of 39 balls. Change in the field. After that 6, third man goes in, square leg goes back. It's a good change, a sensible one. There is no need for third man on the medium pace. And this time plays towards the square leg. There's a fielder there and misses the ball. 4 runs. We have to check. I think there was a slight fumble, but the umpire says it's all right. So just a single. This time Qasim Mughal goes, but again he's not able to find the right timing. The ball rolls towards the long on boundary for a 4, but this shot was not very well timed. He's a very nice timer of the ball, normally times very well, but in this innings till now is not able to find the best of his form. Nonetheless gets 4 runs. Again towards the, this time plays towards the cover, and good call from Ashraf Abbasi. No need to rush. End of 13. 174 for the loss of 2. Ashraf Abbasi has just completed his 100, and Qasim Mughal is playing 8 on 6. 8 on 6 balls. 7 हो गए, चलो कुछ नहीं. ये बॉलर कौन सा है वाला? नया बॉलर? नहीं, इसने पहला ओवर अभी किया है. नासिर. नहीं, ये नासिर, ये कुछ और है, ये कोई और. कासिम है शायद. कौन? कासिम है, नासिर है. Nasir. Oh, in the air, there's a fielder there coming closer and drops it. Little short. And that ball was a little short, but the efforts were not up to the mark. Nasir. Starts his third over. His third over, and this time Qasim plays towards between fine leg and square leg, and the ball rolls down for another 4. They are not looking in the mood of stopping any runs or taking any wicket. They're just trying to finish the overs. Finish the over. The body language is not very good now. Yeah, that's very... Because of the start, they are not trying to fight back. Yeah. No efforts have been seen from him. This one is very well timed. No stopping for that shot. It's just splits the long on and mid wicket. Both fielders had no chance to stop that ball. Another 4. Pani, 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 bhai. अरसलान पानी ले जाओ यार. वो कह रहे हैं चेंज करना है शायद, बट ग्लव्स ले जाओ ना, वो जीएम वाले पड़े हैं. ये ग्लव्स भी ले जाओ. उनके ग्लव्स इधर रखे हुए हैं दूर में. कितना ओवर है? 14. 183 यार. ऐसी बहुत ही this time outside off. बहुत स्कोर कर रहे हैं ऐसे. बहुत ही ज्यादा कर. Wide ball. ਇੰਨੇ ਬੜਾ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦੋ ਆਇਓ ਬਾਹਰ.
पता लगा उन्होंने कोड़ा बैठा है उन्होंने आगे उन लोगों ने खेलना खिलाड़ियों की तरह ही है जितना स्कोर है. and over cover this time. There's a fielder down there. He'll come and field, and that's an easy single for Qasim. Ball was in the slot, but didn't go with the shot. Just half-hearted in the air, far from the fielder, so no chance for a fielder to catch it. Ashraf Abbasi scored a beautiful century today on 39 balls. Now facing, and no fear this time in the air. The fielder underneath it and drops the catch. My goodness. अशरफ भाई इसका भी नंबर ले लो. Last ball of the over coming. This one. A good ball to finish the over. 186 in 14. 186 in 14 for the loss of 2. The partnership is 46 in 23 balls. प्रोजेक्टेड स्कोर पता है कितना आ रहा है? 270. होना चाहिए. इतने ऑर्डर पड़े हुए हैं. बॉलिंग बहुत ही हल्की थी यार, बहुत ज़्यादा हल्की बॉलिंग है. इतनी भी नहीं उम्मीद थी कि ये इतनी हल्की बॉलिंग है. अच्छा इन लोगों के अगेंस्ट बाकियों ने इतना स्कोर नहीं किया. असल में लूज बॉलों में बंदा फंस जाता है. अच्छी बात है, लेकिन ये कि मारने लगे खत्म. दूसरा आज इनकी किस्मत खराब थी, फील्ड पे भी नहीं थे. खेलने में होता है. कितना ओवर हो गया? 14. हैं? 14. 14 स्कोर 186. 186 स्कोर कितनी हो गया? अकबर भाई नस्वार वाला है. यार इनको कासिम अब्बास को वापस लेके आना चाहिए. उसकी बॉलिंग फिर ठीक थी. हाँ. शाबाश शाबाश. Beautiful shot to start with. It's a new bowler Imran. That's a new bowler, and the result is same. There's no difference, no matter which bowler is coming. Ashraf Abbasi is playing the inning of his life. He's never scored this much before. 110 है. Okay, pardon me, it's 110 he scored before, and this one was a loose ball, but Ashraf committed it earlier. बराबर हो गया उसको. He's on 110. So he's on his career high score. He has scored 110 previously, and today again he's on 110. So if he crosses one more run, it'll be his highest. And here it is. Another boundary. A zone for him between square leg and fine leg. The ball rolls to for another 4 and 114. Now he is on the highest score of his career now. Beautifully played inning. No matter the weak link in the bowling, but he played some beautiful shots and didn't give many chances. Just one chance. Other than that, all of them were just good, clean hitting. This time moves towards the off stump and plays between mid wicket and the long on boundary and runs for a single. Good fielding, just covered with ground. Qasim Mughal, and the ball took an outside edge and just crosses the third man boundary. 200 up. 200 up for team Roaring Tigers. Cheers. 200 up.
in the 15th over. This time Qasim Mughal plays it beautifully over square leg for another boundary. So runs are coming in boundaries and sixes for Roaring Tigers. 205 after 15th over. अभी स्कोर क्या हुआ है 205. ओवर्स खेलते रहो खेलो खेलो बाल बुला रहे हो? कह रहे हैं कह रहे हैं आ जाऊं मैं नहीं. नहीं यार लगे रहो लगे रहो पूरा घर पकड़ना था यार आ गया था. अशरफ भाई कायम हो ना सही है. Qasim Abbas is back on bowling. He is the bowler with the lowest economy in this inning. 2 overs 18 runs. Starts with a wide and an extra run. No leg back. Like the pardon is leg buys actually. The bowlers are not learning. Four. Another four from. Another four. They're just bowling on the legs, and there's no fielder in the deep square leg. मुगल का क्या स्कोर है मुगल 29-14 थे. शेर को 150 करवा दो लग तो रहे हैं अच्छे खासे चौके छक्के उनसे यार